We are in the chapter of the cytoplasmic organelles. Today we are going to discuss the important part of the cell, that is the ribosome. Ribosome is not the organelle because it is not the membrane bound. It is called the particle. It is the particle. It is mainly composed of the RNA and the proteins. So ribosome is not an organelle of the cell. It is the particle of the cell that help in the protein synthesis. Ribosome, there's a particle that is present in large number in all living cells and serves as a site of protein synthesis. साइटोप्लाज्म में सेल में राइबोसोम का नंबर सबसे ज़्यादा है और उन सेल में की कंसंट्रेशन का नंबर ज़्यादा होता है जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है एज राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. Ribosome occur both as free particle in prokaryotic and eukaryotic cells and as particles attached to the membranes of endoplasmic reticulum in eukaryotic cells. अगर हम राइबोसोम की लोकेशन की बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में तो फ्रीली पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोटिक में फ्री भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड होते हैं. और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. The small particle that came to be known as ribosomes were first described in 1955 by Romanian-born American cell biologist George E. Palade, who found them to be frequently associated with the endoplasmic reticulum in eukaryotic cells. तो इसकी डिस्कवरी हुई रोमानियन बॉर्न अमेरिकन बायोलॉजिस्ट से, जिसने 1955 में इसको डिस्क्राइब किया. ही वाज जॉर्ज ई पैलेट. The number of ribosomes are remarkably high as compared to the other organelles. Ribosomes are remarkably abundant in cells. A single actively replicating eukaryotic cell, for example, may contain as many as 10 million ribosomes. जो eukaryotic actively जो active cells होते हैं like pancreatic cells, इनमें number of ribosomes 10 millions तक होते हैं. Actually, dividing prokaryotic cell has 25% of ribosomes. In the bacterium Escherichia, that's a prokaryote, ribosomes may number as many as 15,000, constituting as much as 1/4 of the cell's total mass. This is 25% is the 1/4, so 15,000 1/4 of the constituent of the prokaryotic cell is the ribosome. क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जितने सेल में फंक्शन परफॉर्म हो रही हैं वो प्रोटीन्स कर रही हैं. That's why the number of ribosomes are high as compared to other components. The size of the ribosome within the cell varies depending on the cell type and on factors such as whether the cell is resting or replicating. The average ribosome of E. coli, the best characterized example, measures about 200 angstrom, about 20 nanometer in diameter. Chemical composition of ribosome. Ribosome mainly composed or made up of RNA and protein. RNA और प्रोटीन इसकी कंपोजिशन होती है. In E. coli, in bacteria, they contain 34% proteins and 66% RNA. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की जो कंपोजिशन है उसमें प्रोटीन की अमाउंट 34% है और आरएनए की 66% है, while in eukaryotes they contain 40% protein and 60% RNA. Chemical composition of large subunit is different from that of small subunit. So there are two subunits of the ribosome, large and small subunits. तो दोनों की composition different है. The size and sedimentation coefficients of ribosomes and their subunits and the ribosomal RNA vary in prokaryotic cytoplasm, eukaryotic cytoplasm, mitochondria and chloroplast. क्योंकि राइबोसोम की जो लोकेशन है वो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में भी है, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी है. तो इसमें जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है हर सेल में. प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है या क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली का राइबोसोम में वो सिमिलर है प्रोकैरियोटिक की तरह, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स की बेस पे हम जब सब यूनिट्स कहते हैं 70s और 80s, दीज आर डिफरेंट. In prokaryotes, proteins in small subunits, that is 30s, are designated as S1, S2, S2 up to S21, and each type is present in a single copy. In the large subunit, that is 50s, the 31 specific proteins are designed as L1, L2, nothing exceeds to 31. तो हमने डिस्कस किया कि there are two subunits, small subunit and large subunit. जो small subunit है प्रोकैरियोटिक का उसमें 21 प्रोटीन्स हैं, उनको हमने S के नाम से
डिनोट किया। और जो लार्ज सब यूनिट है जो 50s है उसमें 31 प्रोटीन्स हैं जो L1 to L31 तक एक्सिस्ट करती हैं। वन प्रोटीन दैट इज L7 to L12 is present in 4 copies ribosomes while the rest are present in the single copies। L7 और L12 की 4 कापीज होती हैं, बाकी जितने भी प्रोटीन होती हैं लार्ज सब यूनिट में वो उनकी सिंगल कापी होती है। Ribosomal RNA. The 70th ribosome contains 3 types of RNA, that is 23S RNA, 16S RNA and 5S RNA। तो हमने डिस्कस किया कि जो 2 सब यूनिट्स हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। और जो कंप्लीट राइबोसोम होते हैं वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज द 70s प्रोकैरियोट के केस की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो फर्दर अगर हम बात करें तो उसमें 23S RNA होता है, उसमें 60S RNA होता है और 5S RNA होता है। 23S RNA and 5S RNA occurs in the large 50 subunit ribosomal subunit, while the 16S ribosomal RNA occurs in the smaller 30S ribosomal subunits। जो राइबोसोम और आरएनए होते हैं वो 23S RNA है, 16S RNA और 5S RNA है। जो 23 और 5S RNA है, these are the component of the large subunit, while the 16S RNA is a component of the small subunit। The 23S RNA contains 3200 nucleotides, 16S RNA contains 1600 nucleotides, and the 5S RNA include the 120 nucleotides। The 80th ribosome, that is the eukaryotic ribosome, also contains 3 types of ribosomal RNA, that is 20S RNA, 18S RNA, and 5S RNA। Similarly, 20S RNA or 5S RNA occurs in the large 60S ribosomal subunit, while the 18S RNA occurs in the smaller 40S ribosomal subunits। तो इन समरी हम कह सकते हैं कि जो 70s RNA है उसमें 23, 16S और 5S RNA होते हैं। जो 23 और 5 है वो लार्ज सब यूनिट में होते हैं और 16 जो है वो 30S सब यूनिट में होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक के राइबोसोम की बात करें उसमें जो 80S का राइबोसोम होता है उसमें 20S, 18S और 5S RNA होते हैं, जिसमें 20S और 5S RNA लार्ज सब यूनिट में होते हैं और 18S RNA स्मॉल सब यूनिट में होता है। 28S ribosomal RNA has a molecular weight that is 1.6 into 10 power 6 daltons, and its molecule is double stranded and having nitrogen bases in pairs. The 18S ribosomal RNA has the molecular weight 0.6 into 10 power 6 daltons. The molecule of 5S RNA, ribosomal RNA has a clover leaf shape and length equal to 120 nucleotides. Other constituents of ribosomes, there's a little doubt that magnesium is the chief ion physiologically since it is present in high concentration in red level ribosomes। तो मैग्नीशियम आयंस राइबोसोम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को जो बाइंड करते हैं वो मैग्नीशियम आयन करता है। इट इज द मोस्ट एक्टिव इन मेंटेनिंग द ATS स्ट्रक्चर एज इट इज एसेंशियल फॉर अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेशन इन विट्रो। द अदर मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स आर क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, आयरन एंड कैल्शियम। Ribosomal enzymatic proteins. Most of the ribosomal proteins act as enzymes, thereby catalyzing protein synthesis. Insertion proteins like IF1, insertion factor protein 2, IF2, IF3 initiate the process of protein synthesis, whereas transfer proteins G factor and TS factors help in translocation of ribosome, our messenger RNA, and transfer of transfer RNA residue from one side of the ribosome to the other side. These factors and these different proteins help in the protein synthesis, राइबोसोम की ट्रांसलोकेशन में और इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस में। अनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड ट्रांसफरेज helps in the transformation of the peptide chain to amino acid transfer RNA and other enzymes termination of completed polypeptide chain। तो पेप्टाइड ट्रांसफरेज का काम जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पेप्टाइड चेन्स फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड्स उसमें पेप्टाइड ट्रांसफरेज हेल्प करता है इन द इलांगेशन ऑफ द चेन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। Structure of ribosome. Each ribosome is composed of 2 subunits, a large one and a small one, each of which has a characteristic shape. The subunits typically are referred to in terms of their sedimentation rate, which is measured in Swede per units in centrifugal fields. The small and large subunits of eukaryotes are designated as 40S and 60S respectively. Small is 40 and large is 60, while prokaryote contains a small 30S subunit and large 50S subunit.
दोनों को कंबाइन करेंगे 70s बन जाएगा प्रोकैरियोट, और जो लार्ज सब यूनिट है वो कंप्लीट, दैट इज 80s। Prokaryotic ribosome 70s, large subunit is 50s and small subunit is 30s। large subunit में 23s और ribosomal RNA होते हैं और 5s ribosomal RNA होते हैं, जबकि small में 16s ribosomal RNA। eukaryotic ribosome की बात करें तो complete ribosomal sedimentation 80s, large subunit की sedimentation 60s and small की 40s। large में जो RNA है that is the 28s, 5s और 5.8s भी होता है, और 40s में 18s होता है, 18s ribosomal RNA। A small subunit consists of three regions. Number one, head, platform, and base. The large subunit also consists of three regions, namely stalk, ridge, and central protuberance. These are structural components of the small and large subunit. Small में head होगा, platform होगा और base होगा, जबकि large में stalk होगा, ridge होगा और central protuberance होगा। When associated together, the head of the small subunit and the central protuberance of the large subunit face each other. दोनों हेड और सेंट्रल प्रोटूबरेंस एक दूसरे के साथ फेस टू फेस यूनाइट होंगे। The diagrammatic representation of the small subunit and the large subunit. This is the small subunit having three components or three parts. One is the base, that is the lower part, and is the platform, and having the cleft. And this is the head of the small subunit. 3' end of the 16s ribosomal RNA and the 5' end of the ribosomal 16s ribosomal RNA. The large subunit also has three parts. In the ridge, that is the protruding end, this is the stalk, and the central protuberance. As the large subunit have different types of ribosomal RNA, 23s ribosomal RNA and 5s ribosomal RNA. जब दोनों small subunits और large subunit combine होंगे in the presence with the help of magnesium ion, they will form the complete ribosome that is mainly helpful in the synthesis of the protein. The structure of the ribosome, that is the important site for the messenger RNA binding. The ribosome has a messenger RNA binding site and the three transfer RNA binding sites. The three transfer RNA binding sites are A, P, and E. A is for the amino acid transfer RNA site, P is the peptidyl transfer RNA site, and the E is for exit. A is the acceptor site, वो site जहाँ पे transfer RNA having the amino acid आकर bind करेगा, and the peptidyl site is the site that is used for the peptide synthesis having the long chain of the amino acid, and this exit site जहाँ से जो ट्रांसफर आरएनए है वो रिलीज आउट होगा। तो दोनों सब यूनिट्स का प्रोटीन सिंथेसिस में कंबाइन होना जरूरी है। लार्ज सब यूनिट के पास तीन पार्ट्स हैं, ई पी ए। E is for exit, P is for peptidyl site, and is for acceptor site। लेकिन जो सबसे पहला अमाइनो एसिड है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान वो पी साइट पे आकर अटैच होगा, देन ए साइट पे आएगा, ए साइट से जो अमाइनो एसिड जहाँ से डिटैच होगा, पी साइट से डिटैच होगा और वहाँ पे ए साइट पे जाएगा, वहाँ पे पेप्टाइड बार बनेगा। इसी तरह एलिंगेशन होती रहेगी, जो प्रोटीन सिंथेसिस का एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। Location of ribosome. Ribosomes are present in two cytoplasmic locations. At any given time, free ribosomes are suspended in the cytosol, while bound ribosomes are attached to the outside of the endoplasmic reticulum or nuclear envelope. तो ribosome की दो locations है. One, ribosomes are present in the cytosol or cytoplasm, and the other is with the endoplasmic reticulum. अब दोनों का अपना अपना functions है. Bound and free ribosomes are structurally identical and ribosomes can alternate between the two roles। दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, जो बाउंड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जो फ्री होते हैं, दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, लेकिन अल्टरनेट होते रहते हैं, कभी बाउंड होंगे कभी फिर फ्री होंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स मेड ऑन द फ्री राइबोसोम फंक्शंस विद इन द साइटोसोल। जो फ्री राइबोसोम पे प्रोटीन बनती हैं वो साइटोसोल में फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल, एंजाइम्स दैट कैटालाइज द फर्स्ट स्टेप ऑफ शुगर ब्रेकडाउन आर द एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, दे आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ फ्री राइबोसोम्स, while the bound ribosomes generally make proteins that are destined for the insertion into the membranes.
for packaging within the certain organelles such as lysosome or for the export from the cell that is secretions. वो प्रोटीन जो उन्हें सेल से एक्सक्रीट होना है, वो प्रोटीन जो उन्हें मेम्ब्रेन में पैकेज होने लाइक द लाइसोसोम या जो उन्हें स्ट्रक्चर बनानी है, वो प्रोटीन हमेशा बाउंड राइबोसोम से सिंथेसाइज होंगी. Cells that specialize in protein secretions, for instance, the cells of the pancreas that secrete digestive enzymes frequently have higher proportion of the bound ribosomes. क्योंकि ये secretory proteins produce करते हैं, that's why they have the bound ribosomes. Ribosomes functions. The main function of ribosomes are they assemble amino acids to form specific proteins. Proteins are essential to carry out cellular activities. तो हम कह सकते हैं ribosome are protein synthesis machinery. The genetic message from the messenger RNA is translated into proteins during RNA translation. जब RNA translate होगा, जो कोडॉन है उनके मुताबिक अमीनो एसिड आपस में अटैच होंगे. That attachment is helpful by the ribosomes. उसमें स्मॉल सब यूनिट के साथ मैसेंजर आरएनए बनेगा का अटैच होगा, फिर लार्ज सब यूनिट ट्रांसफर आरएनए आएगा हैविंग द मेथियोनिन अमीनो एसिड, देन लार्ज सब यूनिट आएगा और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन द प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टार्ट. द सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन असेंबली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस आर स्पेसिफाइड इन द मैसेंजर आरएनए. जो प्रोटीन सीक्वेंस का जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो सीक्वेंस है वो मैसेंजर आरएनए स्पेसिफाई करता है बाय स्पेसिफिक कोडॉन. Messenger RNA is synthesized in the nucleus and is transported to the cytoplasm for further process of protein synthesis. Messenger RNA की जो synthesis है वो nucleus में हो रही है in the eukaryote by the process of the transcription, and the further synthesis of protein is done in the cytoplasm with the help of the ribosomes. In the cytoplasm, the two subunits ribosomes are bound around the polymers of the messenger RNA. Proteins are then synthesized with the help of transfer RNA. Transfer amino acid लेके आएगा और वो पी साइड पे आकर पहला ट्रांसफर ने बाउंड करेगा, फिर ए साइड पे आएगा, वो दोनों आपस में अटैच होंगे. जो पी साइड वाला है फ्री होकर ए साइड से एग्जिट कर जाएगा. इस तरह जो एलोंगेशन होगी प्रोटीन सिंथेसिस की. द प्रोटीन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर यूज्ड इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ. द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बाउंड राइबोसोम्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हो रही है वो साइटोप्लाज्म में इस्तेमाल होंगे. वो प्रोटीन्स जो बाउंड राइबोसोम से सिंथेसाइज हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज हो रही है, वो सेल से एक्सक्रीट होंगी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. Ribosome also help in the synthesis of different types of enzymes that are helpful in their metabolism. So ribosome play important role in the metabolism. Ribosome also play important role in the signaling protein synthesis. So basic function ribosome का है protein synthesis. Whatever the type of protein, that each and every type of protein are synthesized with the help of ribosomes. That's all about the ribosome. We discussed that ribosome is a particle having no membrane bound, and ribosomes have the ribosomal RNA and the proteins. Ribosomes may found in the cytoplasm in the free form and in the bound state or bound form in the endoplasmic reticulum. Both perform different types of functions. Structure of both ribosome is similar. In case of eukaryote, these may be present in the cytoplasm or in the endoplasmic reticulum, while in case of prokaryote, ribosomes are always present in the cytoplasm. The main function of the ribosome is protein synthesis. Thank you so much.